Hello everyone, very good evening to all of you. All clear? All clear? Yes, very good evening Deepak, Sagar. Initially aji tike problem dekhela YouTube re, so that's why little bit late. But ବେଶୀ ବି late ହେଇନି, ଅଳ୍ପ late ହେଇଛି 5 to 10 minutes, still late by 10 minutes. But this is because of some technical glitch from YouTube side. Anju, very good evening. Good evening Shivangi. सब क्लियर? ठीक अच्छे. So start करिवा हमें आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. लास्ट क्लास रे कौन देखिथिले? Last class we have discussed about last class रे कौन डिस्कस करथिले हमें? Last class रे टॉपिक ऑफ डिस्कशन थिला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. So the first class इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हमें देखिथिले ना लास्ट क्लास. इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन देखिथिले हमें लास्ट क्लास. आज क्लास रे देखिबा हमें नेशनल इनकम. नाउ अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स पई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम. बुझिला कि नहीं? यदि ए टॉपिक हमें देखिबा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. You can expect one question from this section. এবং যদি স্কিম রু মধ্যে এই টপিক উপর কিছু স্কিম বা ইম্পর্টেন্ট পলিসিজ উপর মধ্যে আসি পারে. তো কেবল ওসিএস নুহে, ইন অলমোস্ট অল द एग्जामिनेशंस যেতବେଳେ ইকোনমিক্স র কোশ্চিন আসে এই টপিক রু গোটে কোশ্চিন প্রায়ত আসে. ঠিক আছে? তাহলে ন্যাশনাল ইনকম কহিলে আমি কোন বুঝে? व्हाट डू यू मीन बाय ন্যাশনাল ইনকম? व्हाट इज इनकम? इनकम কোন, তারপরে মু কইবি ন্যাশনাল ইনকম কোন. इनकम गोटे लोकर जमी आम इनकम कैलकुलेट कर इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट इनकम फॉर द एंटायर नेशन एंड दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. वेरी सिंपल. व्हेन वी कैलकुलेट इनकम फॉर द एंटायर नेशन देन दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. वेरी सिंपल हैला. देखो नाउ केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट कहूची तापरे मु आसीबी. देखो यदि इकोनॉमी रे आमे देखिबा, there are four players in the economy, or मु कहि simply there are four contributors in the economy. There are four contributors in the economy. के ना individual or household, business, farm or investor, government and foreign national. इजी कैलकुलेशन पई हमें फर्स्ट दीटा को नबा, लास्ट दीटा को नबानी कैलकुलेट करिवानी. तल कहा को नबा हाउसहोल्ड बा इंडिविजुअल एंड अगुना बिजनेस फार्म और द इन्वेस्टर. ए दी जन को हमें कैलकुलेट करिवा. ता पूर्व आ गोटे छोटो एग्जांपल मन कर मु मार्केट को गली, मार्केट को जाई कि 500 टंकार किछि प्रोडक्ट किन के आनली. केते टंकार? 500 टंकार किछि प्रोडक्ट किन. नाउ दिस 500 रुपीस इज इनकम और एक्सपेंडिचर फॉर मी. गीतांजलि, मु मार्केट गली 500 टंकार किछि प्रोडक्ट किन के आनिबी. नाउ दिस 500 रुपीस इज इनकम और एक्सपेंडिचर फॉर मी. मो पई एटा एक्सपेंडिचर, हां कि नहीं? मो पई कोन एटा? फॉर मी दिस इज एक्सपेंडिचर. यस और नो? यस, दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर. मन कर 500 टंकार मु वेजिटेबल किनिछि और फ्रूट्स किनिछि. कोन करछि? 500 टंकार मन कर मु फ्रूट्स किनिछि. नाउ फॉर द शॉपकीपर, ये 500 टंका कोन? दिस 500 रुपीस इज इनकम फॉर द शॉपकीपर. यस और नो? 500 rupees is income for the shopkeeper, whereas 500 rupees is expenditure for me. Agreed? समस्त राजी कि नहीं? मते प्रथमे कोन हां कि नहीं? समस्त एई कथा राजी कि नहीं? 500 टंकार मु प्रोडक्ट किनिली, फ्रूट्स किनिली, वेजिटेबल्स किनिली. नो 500 rupees is, now this 500 rupees is income for expenditure for me, and that 500 rupees is income for the shopkeeper. Is this clear? Yes. So someone's income is equals to someone's expenditure. Can I write my expenditure
is equals to shopkeepers income लिख परिबी my expenditure is equals to shopkeepers income. Can I write this statement? This statement stands true or false? Absolutely true. Yes or no? This statement stands absolutely true. ठीक अच्छे स्टेटमेंट कि नहीं? हाँ ठीक अच्छे ताले एक्जाक्टली इन द सेम वे यदि इकोनॉमी रे जेते लोक अछन मु समस्तंकर इनकम कैलकुलेट कर दउची कोन कहले एक्जाक्टली इन द सेम वे यदि इकोनॉमी रे जेते लोक अछन मु समस्तंकर इनकम कैलकुलेट कर दउची ताले मते नेशनल इनकम मिलिबो कि मिलिबोनी इकोनॉमी रे सब लोकंक इनकम कैलकुलेट कले मते नेशनल इनकम मिलिबो कि मिलिबोनी इकोनॉमी रे सब लोकंक एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कले मते नेशनल इनकम मिलिबो कि मिलिबोनी because income of all is equals to expenditure of all समस्तंकर income is equals to समस्तंकर expenditure तो ये एग्जांपल है my income equals to shopkeepers income in the same way समस्तंकर income जति के हबो अन्य मानकर expenditure भी सेति के हबो yes agreed okay ताले एठी हम बुझिले कोन ना गोटे मेथड रे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर परिबे दैट इज इनकम मेथड आ गोटे मेथड हला एक्सपेंडिचर मेथड बा दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन मेथड दीटा मेथड कहली गोटे ला इनकम मेथड आ गोटे कहली कोन कंजम्पशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर थर्ड मेथड को आसीबी तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर डिस्कशन करूचे देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ना देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ना लैंड लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन व्हिच असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल and entrepreneur land labor capital और entrepreneur ये चारिटा हले कौन ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बुझेला ये चारिटा कौन कहले चारटा को हम कहले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आ कहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज दिस क्लियर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ना व्हिच असिस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच असिस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस जे प्रोडक्शन प्रोसेस रे असिस्ट करे ताको कह जाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बर्तमान देखो एटी देखो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मु कहली गोटे साइड रे रहला कि हाउस होल्ड आ गोटे साइड रहला बिजनेस फार्म गोटे साइड रहला हाउस होल्ड आ गोटे साइड रहला कि ना बिजनेस फार्म हैला ताले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कहा को दरकार बिजनेस करिया पई हेले तुम कोन दरकार ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दरकार एटा किए दबो ना हाउस होल्ड दबो कहा को ना बिजनेस फार्म किए दबो ना हाउस होल्ड दबो कहा को ना बिजनेस फार्म को दबो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर न या बदल रे मिलिबो कोन लैंड लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योर या बदल रे कोन मिलिबो ना लैंड बदल रे मिलिबो रेंट लेबर बदल रे मिलिबो कोन ना वेज कैपिटल बदल रे मिलिबो कोन ना इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलिबो कोन ना प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर बदल प्रॉफिट एटा किए कहा को दबो एटा बिजनेस फार्म दबो हाउस होल्ड किए दबो बिजनेस फार्म एटा हाउस होल्ड दबो इज दिस क्लियर हाउस होल्ड बिजनेस फार्म को दउची कोन ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ना ये दउची कोन ना रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट किए दउची ना बिजनेस फार्म दउची हाउस होल्ड काहे कि ना दिस ए जो फैक्टर टा रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट नाउ दिस इज इनकम फॉर हाउस होल्ड को इनकम करछ हाउस होल्ड माने गोटे परिवार तो के जाई जणे काम करिवो ना हाउस होल्ड माने कोन हाउस होल्ड माने गोटे परिवार रो गोटे फैमिली रो के जाई जणे काम करिवो यस और नो नाउ बिजनेस फार्म पाई दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म क्लियर नाउ दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस फार्म इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस फार्म इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द हाउस होल्ड तो एटी मिलिला कोन रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट एटा किए देला ना बिजनेस फार्म देला हाउस होल्ड को एवं ये हला कोन हाउस होल्ड देला बिजनेस फार्म को कोन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड बदल रे रेंट लेबर बदल रे वेज कैपिटल बदल रे इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलला कोन प्रॉफिट तला हम देखिले दीटा मेथड गोटेला इनकम आ गोटेला एक्सपेंडिचर इन द सेम वे आ टिके ध्यान देकी सुनिबे आ गोटिए छोटिया पॉइंट अछि बस बुझी गले नेशनल इनकम ऊपर पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आसी जिवो नाउ डे टू डे बेसिस रे हाउस होल्ड किछ ना किछ कंज्यूम करछु कि नहीं ओइ चूड़ा चीनी चावल ड्रेस किछ ना किछ हम कंज्यूम करछु ना something we are consuming on daily basis so jaha me consume karuche that is quantity of goods and services into its price quantity of goods and services into its price
जेति के मिलिला ताको हम कोन को दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कोन कहूचे ताको कहते हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बुझिला व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर बुझिला कि नहीं व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर रे हम एटी कोन देखुचे कंजप्शन एक्सपेंडिचर रे हम एटी कोन देखुचे ना क्वांटिटी इनटू प्राइस कोन कहली क्वांटिटी इनटू प्राइस दैट गिव्स यू कंजप्शन एक्सपेंडिचर सिंपल कथा तो ये गुड्स एंड सर्विसेज केतिकी खर्च डेली बेसिस रे तुम घर केतिकी खर्च होची तो जहा जहा कंज्यूम करछ इनटू तार प्राइस कोन बोल जहा जहा कंज्यूम होईची इनटू तार प्राइस दैट विल गिव यू कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट विल गिव यू कंजप्शन बुझिला कंजप्शन एक्सपेंडिचर कोन सो ए जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर टाको कहै जाउछ कोना प्रोडक्ट मेथड आउटपुट मेथड बा वैल्यू एडेड मेथड सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार तीनटा मेथड अछि मु सिखेली कोन कहली नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार तीनटा मेथड अछि इनकम एक्सपेंडिचर देन प्रोडक्ट बा आउटपुट बा वैल्यू एडेड मेथड नाउ इज दिस क्लियर बुझेला कि बुझेलानी मते कोन बुझेला कि बुझेलानी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार तीनटा मेथड समस्त बुझी गले बुझी गले ताले एबे मु आसीबी नेशनल इनकम रो हिस्ट्री कोन केमिति नेशनल इनकम इंडिया रे कैलकुलेट होउतला on history of calculating national income in India first time पाई 1868 रे दादा भाई नारोजी कैलकुलेट कले एवं एनुअल पर कैपिटा इनकम केते हला ना 20 रुपीस केते एनुअल पर कैपिटा इनकम इज 20 रुपीस 1931-32 रे फर्स्ट साइंटिफिक मेथड बाय डॉक्टर वीके आरवी राव के बाय हुम ना बाय डॉक्टर वीके आरवी राव then first official attempt by whom na by PC Manlovis first official attempt ne lekhe na PC Manlovis so 1955 onwards CSO calculate kala ke na CSO Central Statistical Office now 55 par 2019 re CSO and NSSO National Sample Survey Organization misi ki kale kono na NSO now NSO 2019 onwards calculate kale national income बुझेला फर्स्ट मेथड कहली 1931-32 फर्स्ट मेथड बाय हुम ना बाय डॉक्टर वीके आरवी राव ही डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू बेसिकली टू पार्ट्स कोन कहली ना गोटे कहले प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग हंटिंग को नेकी सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक सर्विस को नेकी हला कोन सेकेंडरी सेक्टर एवं से कैलकुलेट करले पर कैपिटा इनकम केते ना 62 रुपीस ही कंप्यूटेड per capita income केते नहीं computed per capita income as 62 rupees clear केते 62 rupees से calculate कले per capita income since next point हला DR Gadgil and VK RV Rao first official attempt by DR Gadgil and VK RV Rao the first report presented in 1951 according to which national income of India for 48-49 it was 8710 and per capita income was 225 केते पर कैपिटा इनकम केते 225 बुझियला केते पर कैपिटा इनकम 225 टंका आसिला देन 2019 रे कहली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अंडर रे आसिला एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन ये गोटे ऑटोनोमस बॉडी ये 2005 रे क्रिएट हला अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमिटी से क्वेश्चन करिवो रंगाराजन को कमिटी रो रिकमेंडेशन अंडर रे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन आसिला बुझिला कोन करिवो को कमिटी रिकमेंडेशन ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आसिला बुझी होची मो कथा ये डायरेक्ट क्वेश्चन करिवो ए पॉइंट को क्वेश्चन करिवो सो एठी एनएसओ कोन कले कैलकुलेशन पई इंडियन इकोनॉमी को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर देले कोन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कोन कले ना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एई वे रे आको तीन भाग रे कैलकुलेट कर डिवाइड कर देले का ना इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर किया आसे ना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री ये सब असले प्राइमरी रे सेकेंडरी असला कि ना माइनिंग क्वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई ये सब असले सेकेंडरी टर्शियरी रे किया आसिला ना टर्शियरी रे आसिला ट्रेड होटल ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस रियल एस्टेट ये सब आसिले कोथरे ना टर्शियरी सेक्टर
तो यही तीन भाग में कैलकुलेट डिवाइड करा गला काहाकू ना इकोनॉमी देखो 1950 51 एवं 2021 22 बा करंट पीरियड रे मध्य कंट्रीब्यूशन को सेक्टर रे केते प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन 55% सेकेंडरी 15% टर्शियरी 30% है ना 2021 22 यदि हम देखिबा एटी हला केते ना 55% रो एटी हला प्राइमरी 19% एटी हला 28% सेकेंडरी टर्शियरी इज 53% केते टर्शियरी केते ना टर्शियरी इज 53%. नाउ आई होप दिस इज क्लियर मुझे को सेक्टर ये इट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स रिमेंबर प्रीलिम्स रे ये 100% ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रे से पचारियो को वर्ष केते थिला को सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन कोन कहले को वर्ष को सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन केते थिला से करिवो क्वेश्चन पचारियो तो हैला मुझे हैला हैला नेक्स्ट नेक्स्ट केतरा मेथड को आसीबी नो केतना कांसेप्ट बुझिबा ग्रॉस कोन और नेट कोन ये शब्द दीटा सुनिते ना आज फर्स्ट टाइम ग्रॉस और नेट ये दीटा टर्म सुनिजन समस्ते ग्रॉस और नेट टर्म सुनिजन मन कर गोटे बॉक्स आसिला हैला ये बॉक्स रे गोटे वुडन बॉक्स लेट्स से दिस इज अ वुडन बॉक्स ये वुडन बॉक्स रे अछि कोन ना एप्पल कहला एप्पल अछि केतना 5 केजी से लिखला ग्रॉस वेट इज 5 केजी केते ग्रॉस वेट लिखला 5 केजी तल से बॉक्स रो किछि वेट अछि लेट्स से बॉक्स वेट इज 500 ग्राम तापर एतु देखले ताले एप्पल केते रहइला एप्पल लेला 4.5 केजी now this 4.5 kg is net weight 5 kg is gross weight now 500 ग्राम बाहर गला का पे ना वुडन बॉक्स है ना एक्जेक्टली आ गोटे एग्जांपल दोछि सेमती इन द सेम वे आ गोटे एग्जांपल मु गोटे मोबाइल फोन किनिली 10,000 टंका एवं ताकू बिक्री कर देली किछ दिन यूज कला पर आफ्टर 1 ईयर पर ताकू बिक्री केते करबी 10,000 रु कम रे ना अधिक ना ऑब्वियसली 10,000 रु कम रे करी मन कर मु ताकू बिक्री करली 6,000 ताले केते टंका कमिला ना 4,000 व्हाट इज दिस 4,000 दिस 4,000 इज नथिंग बट कॉल्ड depreciation this is called what is depreciation the depreciation is the wear and tear value depreciation is the what is this na this is the wear and tear value wear and tear value जति कि यूज हैला value for यूज करिवा कारण जति कि टंका कटिला जो 4,000 टंका that 4,000 is called depreciation is this clear what is depreciation is this clear what is depreciation so wear and tear value टाको minus कर देले कोन मिलिबो that will give you a depreciation that will give you depreciation clear what is depreciation so मैं गोटे फार्मूला पाइली कोन ना gross minus depreciation equals to net gross कहि परिबी समस्त राजी gross minus depreciation is equals to net कहि परिबी ना कहि परिबी बा net plus depreciation is equals to gross कहि परिबी ना कहि परिबी कहि परिबी यस एग्रीड समस्त राजी तले ग्रॉस डेप्रिसिएशन नेट तीनटा कथा बुझी गेले एबे आ गोटे कथा बस सर तो हम गोटे प्रोडक्ट किनते मन कर ए पेन ये पेन टा मु किनिछि मन कर लेट्स से 20 टंका पेन टा केते टंका रे किनिछि 20 रुपीस 20 rupees a pen now this 20 rupees is called as the market price of the pen now what is this 20 rupees now 20 rupees is called market price of the pen hela
20 rupees is called market price of the pen. एटा तैयारी करियो कोन 20 टका खर्च हेतो ना 20 टका कम खर्च हेतो तैयारी करबा को 20 टका खर्च हेतिबो ना 20 टका कम खर्च हेतो ना ऑब्वियसली 20 टका कम खर्च हेतिबो सेटा कते ना जोडा फैक्टर कॉस्ट को जाय मन कर खर्च होची 15 टका केते टका खर्च होची 15 टका ना दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट माने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कॉस्ट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कॉस्ट मिसिले हम ताको कोन कहते ताको कहते फैक्टर कॉस्ट नाउ फैक्टर कॉस्ट एटी लेस देन मार्केट प्राइस सो एटी 5 टका जो 20 टका रो 15 टका जिबा परे 5 टका बोला व्हाट इज दिस 5 रुपीस एंड दिस 5 रुपीस इज नथिंग बट प्रॉफिट 5 rupees is nothing but profit 5 rupees is nothing but profit but indirect tax मिसिक अछि indirect tax मिसिक अछि तले एथर मु कोन पाइली ना 15 + 5 = 20 15 + 5 = 20 15 टंका टा कोन ना 15 टंका टा हला फैक्टर कॉस्ट 5 टंका हला indirect tax is equals to 20 हला कोन ना मार्केट प्राइस ये फॉर्मूला पहले कौन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस राजी ठीक अछि कि नहीं ठीक अछि मोर एटा गोटे डाउट अछि मते को तळे हमें 2 टंका रे चावल पाउचे 2 रुपीस गवर्नमेंट कोन प्रोवाइड करछ ना गवर्नमेंट 2 टंका रे चावल दोउची दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट प्राइस इज 2 रुपीस से समय केते मार्केट प्राइस ता केते राइस 2 टंका मार्केट प्राइस 2 टंका ताल मो क्वेश्चन होची फैक्टर कॉस्ट ता केते हितिबो तार एटा कोन 2 टंका रो कम हितिबो मार्केट प्राइस 2 टंका ताको तैयारी करिया पई कोन 2 टंका रो कम खर्च हितिबो टंका टा कि 8 खर्च हितिबो कि गोटे केजी चावल तैयारी करिया पई 1 केजी राइस प्रोडक्शन करिया पई 2 टंका रो कम खर्च हितिबो कि मो क्वेश्चन एते कम रही परियो ना ऑब्वियसली 2 टंका रो अधिक रही हितिबो लेट्स से गोटे केजी राइस प्रोडक्शन करिया खर्च होची 10 टंका लेट्स से 10 टंका कोन ना फैक्टर कॉस्ट इज 10 रुपीस ना मार्केट कॉस्ट 2 टंका ताल केम ताल कोन गवर्नमेंट लॉस रे दोची ना यस गवर्नमेंट लॉस रे दोची केमती टंका टरे गोटे केजी चावल ही परियो वर्षा टंका टरे गोटे केजी कोन ही परियो टंका टरे कोन गोटे केजी ही परियो सौभाग्य नहीं सो एठी 10 टंका हम नेले एग्जांपल ताले एठी कोन होची ना गवर्नमेंट सब्सिडी दोची गवर्नमेंट कोन कोता सब्सिडी दोची ताले 10 टंका एठी कोन लिख परिबी ना 10 टंका माइनस 8 टंका इक्वल्स टू 2 टंका तो 10 टंका टा कोन ना फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस लिख परिबी ताले एठी कोन लिखली फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस दीटा इक्वेशन मिलिला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मते देथिला फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इक्वेशन 2 देला फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तले आपको मु लिख परी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस याको शॉर्टकट रे लिखा जाय फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस एस टाको लिखा जाय एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तले एटा मन नइला ई फार्मूला फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस देखो but indirect tax minus subsidy is equals to net indirect tax so factor cost plus net indirect tax equals to market price clear हाँ कि नहीं recorded yes recorded class available na you can go to the playlist जाइए देखिए देवे playlist available whatever classes I am taking recorded of every class is available in YouTube channel everything is available for your greatest benefit now it भी available application भी हमर जहा क्लास होची आप रे मु जहा क्लास होची पीडब्ल्यू एप्लीकेशन ने तार भी गोटे recorded class होची ताकू भी recorded देखि परिबे हैला
ताले दीटा फार्मूला हम पढ़ेली दीटा फार्मूला हमें बुझले गोटे हला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट आ गोटे फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस आ गोटे कोन फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस दीटा फार्मूला हमें पढ़ले मन रही गला एबे आसीबा हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया पई एबे आसीबा हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट कर फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम इन दी प्रोडक्शन मेथड प्रथम हम प्रोडक्शन मेथड रे नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया जीडीपी और एनडीपी टिके ध्यान दे कि सुनिए 10 मिनिट बुझिबो नेशनल इनकम लाइफ टाइम पई बुझिजिबो कोन कहले 10 मिनिट्स गिव मी 10 मिनिट्स आई विल क्लैरिफाई नेशनल इनकम आई डोंट वांट योर ब्लड मु कहूनी कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस मु सिंपली कहू गिव मी 10 मिनिट्स आई विल क्लैरिफाई नेशनल इनकम 10 मिनिट दियो 10 मिनिट प्रॉपर्ली बुझ 10 मिनिट रे नेशनल इनकम बुझियो तापर आउट आउट आसीबोनी केबे हैला ताले नेशनल इनकम हमें फर्स्ट कैलकुलेट करिया वर्तमान कोथरे इन प्रोडक्शन मेथड कोन कहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया हमें प्रोडक्शन मेथड रे फर्स्ट इज जीडीपी सेकंड एनडीपी जीडीपी कोन जीडीपी रो फुल फॉर्म कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यार डेफिनेशन कोन कहूची and this is the value of all final goods and services गोटे पर गोटे बुझिबा goods कोन आ सर्विसेज कोन goods ता होची जोटा tangible माने जहा को देखि हेबो कोन एटा tangible माने जहा को देखि हेबो सर्विसेज intangible देखि हेबो नाही एग्जांपल goods रा मु कहबी गोटे पेन अछि मो पाखरे गोटे लैपटॉप अछि मो पाखरे ये सब बोले tangible intangible कोन मु कहबी एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर गोटे टीचर गोटे लॉयर रा एडवाइस दैट इज सर्विस ये कहूची फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कोन और इंटरमीडिएट कोन टिके बुझिया मन देखि मन कर मु गोटे कार किनिबा को गली ते कार रो वैल्यू हला केते ना 5 लाख टका नाउ ये कार रे चारिटा चक्का अछि 4 व्हील्स आर देयर गोटे व्हील रो वैल्यू 5000 चारिटा व्हील को केते 20000 टका मु 5 लाख टका दे कार किनिला परे कोन ये चक्का पई 20000 टका आउथरे दउची हां कि नै डी कहबे मो प्रश्न हला मु जो 5 लाख टका दे कि कार किनुची चारिटा व्हील पई 20000 टका मु कोन आउथरे दउची हां कि नै खाली डी कहबे दउनी ना काइना बिकॉज़ 5 लाख रुपीस इंक्लूड्स 20000 रुपीस सो एई जगह रे जो व्हील चारिटा किनिली याकू कोआ जीवो इंटरमीडिएट गुड्स कोन कोआ जीवो ना दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स हैला आउ गोटे पॉइंट देखिबी मो चक्का खराब हो गला खाली खाली गली चक्का किनि आनली व्हील्स किनि आनली तो सेटी 5 into 4 20000 नाउ ये जगह रे आई हैव टू पे कोन कहले ये जगह रे आई हैव टू पे जोटी पेमेंट करिया को मते पड़िला दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स कोन कहले जोटी पेमेंट करिया को पड़िला कोन कहली ताको कहली फाइनल गुड्स हैला तुम को सर गुड्स तो बुझी गली जोटी पेमेंट कली फाइनल जो पेन किनुची पेन रिफिल पसिक आछि तो से रिफिल ला मो पई इंटरमीडिएट पेन लेखिली काली सरी गला नुवा रिफिल किनिबा को बोली नुवा रिफिल किनि के आनली सेटा हे गला मो पई फाइनल गुड्स बट पेन भीतर थिवा रिफिल किनिला बेले से मो पई हे गला इंटरमीडिएट गुड्स सागर आउ थरे कहू छुना गोटे पेन किनिली 10 टका देकी पेन भीतर रिफिल अछि ना रिफिल पई मु एक्स्ट्रा पेमेंट कली नाही तो रिफिल रो प्राइस इज इंक्लूडेड इन दैट 10 रुपीस से 10 टका रे रिफिल प्लस पेन मिसी के अछि मु पेन लेखिली लेखिला परे काली सरी गला खाली रिफिल जाई के आउ थरे किनि के आनिली 5 टका दे किनिली न तो मु किनि के आनिली दैट इज द फाइनल गुड्स जेतबे न किनिली पेन भीतर थिला दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स गला गुड्स तापर आसीबी सर्विस कोन टिके बुझिबा त 2 मिनिट पुनी 2 मिनिट सर्विस बुझिबा सर्विस कोन कहूची ना हमर तो बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ुची हम जाउचे गोटे मेडिसिन स्टोर रे ब्लड प्रेशर मापी देई के 20 रुपीस दोचे 20 टका दे दोचे तब नोय की सेमती बा वेट मेजर करिया पे देखो रास्ता साइड रे लोक बसते वेट मेजर कर दे 5 टका 10 टका दे दो बट व्हेन यू आर विजिटिंग अ प्रोफेसर मेडिसिन प्रोफेसर पाखु तो जाउचंदी देह खराब अछि सही समय रे कोन होउची ना डॉक्टर कंसल्टेंसी करिया पूर्व गोटे लोक बसिथिबो जे तुम वेट मेजर करके लिखि दो जे तुम बीपी मेजर करके लिखि दो जे तुम पल्स रेट मेजर करके लिखि दो तो एठी या पई 20 टका या पई 20 टका या पई 20 टका आ 60 टका हम एक्स्ट्रा दउने कौन कहली एठी हम 60 टका एक्स्ट्रा दउने काहे कि ना प्रोफेसर फीस जोटा अछि मनकर प्रोफेसर फीस 500 रुपीस
500 रुपीस भितर ये 60 टंका मिसिकी अछि एक्स्ट्रा हमको दवा को पड़ू नहीं सो दिस 60 रुपीस और ये तीनटा प्रोडक्ट दिस इज इंटरमीडिएट सर्विस हियर या पई पेमेंट दिया जाउनी but when you are consuming this service from the medicine store you have to pay that money 60 rupees you have to pay so that point of time that 60 rupees is nothing but known as your final service that 60 rupees is final but here 60 rupees is not final this is intermediate so जोटी पेमेंट करूचंती सेटा फाइनल जोटी करू नाहंती सेटा ला इंटरमीडिएट ये कौन कहूची ना ये कहूची जीडीपी रे मॉनिटरी वैल्यू कहार कैलकुलेट करिवो ना ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंटरमीडिएट ओनली फाइनल नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं बुझेला ना ये कुछ विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन व्हाट इज व्हिच बाउंड्री ना तुम्हें कहो सर एटा तो इंडिया रा बाउंड्री या भीतर जहां प्रोडक्शन ला सेटा कि नो इन द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक बाउंड्री मु कहबी इंडिया रे गोटे कॉन्सुलेट ऑफिस फोन करे यूके रे अछि कि यूएसए रे अछि बा चाइना रे अछि गोटे कॉन्सुलेट गोटे एम्बासी अछि एम्बासी ऑफिस अछि तो ता भीतर जहां प्रोडक्शन होछि से इंडिया रा इकोनॉमिक सर्विस भीतर सॉरी इंडिया रा इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर आसीबो इन द सेम वे मु जदी कहबी यूके रो गोटे एम्बासी ऑफिस अछि इंडिया भीतर no ये इंडिया रो ज्योग्राफिकल टेरिटरी भीतर जाउची बट इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर नुहे काहे कि ना एठी जहां प्रोडक्शन हबो सेटा यूके रो नेशनल इनकम रे ऐड हबो इंडिया रो नुहे एग्जैक्टली इन द सेम वे इंडिया रो एम्बासी ऑफिस जहां जहां फॉरेन कंट्री मान करे अछंती से सब इकोनॉमिक इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर आसीबे इंडिया रो ज्योग्राफिकल टेरिटरी भीतर नुहे तो ये कहूची कोन ना मॉनिटरी वैल्यू को वैल्यू दिस इज द वैल्यू लिखले ना को वैल्यू ना दिस इज द मॉनिटरी वैल्यू माने मनी रे तार पैसा आकार तार हिसाब कर दबो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज कोठी प्रोड्यूस हेची ना प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ नेशन गोटे नेशन ना बाउंड्री भीतर प्रोड्यूस हेची ड्यूरिंग केते बेले ना ड्यूरिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ताले गोटे फाइनेंशियल ईयर किए गोटे इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर मु कहबी मन कर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होची केबे ना 1 अप्रैल 2025 रु आरंभ होची सरुची केबे ना 31 मार्च 2026 रे सरुची बुझिला मो कथा 1 अप्रैल 2025 रु आरंभ होई 31 मार्च 2026 रे ये सरुची ताले पूरा फार्मूला टाको आउथरे देखिबा जीडीपी कोन ताले गोटे पीरियड माने गोटे फाइनेंशियल ईयर इन वन फाइनेंशियल ईयर इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर जेते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हेइछंती कोन कहली इन वन फाइनेंशियल ईयर इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर जेते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हेइछंती तार मॉनिटरी वैल्यू को जीडीपी बोली कहा जाए एती कथा बुझेला बे जीडीपी ना डाउट अछि इज जीडीपी क्लियर और नॉट आउ सिंपलीफाई करियो ओनी Now I discussed about GDP in the most simplified form. GDP कौन कहली in the most simplified form जदि डाउट होइला को क्लियर वर्षा बुझेला अन्य माने अदर्स टिक हां कि नहीं खाली को टिक हां कि नहीं कह देबो हैला वाला दीदी सेंदी ग्रॉस रु मु कहितली डेप्रिसिएशन टा को माइनस कर देले मिलिबो कोन ए नेट सेंदी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू व्हाट इट विल गिव यू एनडीपी so depreciation is consumption on fixed capital कोन depreciation कोन depreciation is consumption on fixed capital जेति की टंकार प्रोडक्ट हम एई वर्ष बनै जे किस दिन पर तार वैल्यू कमी जो से वैल्यू टा को माइनस कर देले व्हाटएवर यू आर लेफ्ट विथ दैट इज कॉल्ड एनडीपी आ गोटे पॉइंट बुझिबा मने कर हम देखले एटी इंडिया भीतर कोन प्रोडक्शन होची एटी कैलकुलेट कले एमती भी पारे किछि फॉरेनर आसे कि इंडिया रे इनकम करछन यूके रो यूएसए एट द एंड ऑफ द डे सेवन टंका नै कि बाहर को पड़े इन द सेम वे
किसी इंडियन जाई फॉरेन रे इनकम करछन एंड ऑफ द डे से माने इंडिया को टंका आनी आसी तो इंडिया को आमे देखिले गोटे मनी फ्लो करूची बा इनकम आसुची इनकम बा मनी इनफ्लो होची इंडिया भीतर को आसुची आउ गोटे इंडिया रु बाहर को जाउची जहा को आमे करना आउटफ्लो होची इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन कहली इनफ्लो इंडिया को जति के आसुची एवं इंडिया रु जति की बाहर को जाउची सेटा को कौन कहा जाय ना दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बुझिला मो कथा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन तो एई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जते बेले हमें जीडीपी रे ऐड कर दोछे जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट विल गिव यू जीएनपी बजा को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कौन कहूचे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सिंपली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर दे इट विल गिव यू एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एटी जीडीपी रो डेप्रिसिएशन माइनस कले से होतला तुमको एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्जेक्टली जीएनपी minus depreciation that will give you also NNP. Is this clear? GDP, NDP, NNP सब पूछेला ना नहीं हो पता पूछिए गला पूछिए गला ताले एथुर हमें कोन पढिले टिके देखिदवा कोन कोन जिंस देखिले जीडीपी रु ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रे नेट national factor net factor income from abroad add kale that will give you GNP now GNP रे depreciation minus कर दे that will give you NNP NDP रू depreciation minus कर दे that will give you NNP ना ये साइकिल समस्त बुझी वाले ये साइकिल एडी देखो जी साइकिल समस्त बुझी वाले ना नहीं hope the cycle is clear to everyone clear क्लियर बुझी गला ताले क्वेश्चन को आसी हम कतरा क्वेश्चन दे मत टे कर दियन ताले गोटे पॉइंट मन रखिबो ए आरो रो सेम डायरेक्शन रे गले ऐड हबो आरो रो अपोजिट डायरेक्शन रे गले माइनस हो कोन कहली आरो रो सेम डायरेक्शन रे गले प्लस अपोजिट डायरेक्शन रे गले माइनस ठीक है देखि देबा जीडीपी रु एनडीपी एमती आसीबो ताले आरो रो सेम डायरेक्शन आसु ताले प्लस हो जीडीपी प्लस